Good morning, all of you. Good morning, Good beta. morning, sir. Good morning. दक्ष कहाँ चला गया? दक्ष अपनी गाड़ी खड़ी करके चला गया था। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, कहाँ चले गए थे अपनी गाड़ी खड़ी करके? No, sir, I was only here. अच्छा, वो आई थॉट तुम अपनी कार पार्क करके कहीं चले गए। Sir, how is the car looking? वेरी नाइस। योर कार इज लुकिंग लाइक यू। It वेरी is a नाइस। Mercedes-Benz SUV. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। It is, your car is also like you, very expensive and very nice, very precious. So today no one boy is sir joining except me. मैं भी बॉय हूँ बेटा, मेरी भी गिनती बॉयज ही होती है। No, sir, आप तो सर है, सब बच्चों के तो। अच्छा, बच्चों की बात करते हैं। So today, sir, my sir, one is not sir doing sir any written work. What? You are not feeling like doing any written work today? Yes, sir. Okay, because New Year is Sir, coming. exam, sir. Yeah. Yes, sir, New Year, sir. Sir, Happy New Year in advance. Happy New Year in advance. Thank you. Same to you. May you do many new things in the new year and score very good marks, become Sir, the topper of the school. thank you, sir. And Sir, on New Year, sir, I will come to your sir Bali Beach. yes, sure. Why not? Most welcome. There is a party here on 31st of December night. There is a party. You are most welcome to join the party. I will send you the passes. Okay. I will send the passes to your home. Fine. Sir, Yes, sir. so tomorrow after exam there will be classes also. Yes, beta. Yes. Unfortunately. So we have to start from third question of 15 chapter properties of triangle exercise. Sir, one minute. Exercise. We are doing properties of triangles and we have done till which question or which exercise? Sir, we have done 15B question till second question. 15B, third question we have done. I did the second one No, and sir, third question. I asked you all to do Yes, the sir. third one yourself. नहीं करा मतलब? Yes. Sir, I cannot understand. इसका मतलब आपने करा नहीं. Sir. Third one, ऐसा क्या था भाई? ना समझ में आने वाला. It's same as question number 2. Because you have not done, now you are saying that I was not able to do it. That means you have not understood. Everyone, please start your video. All the 400 students, please start your video. Question number 3. आप आ गया. D C 65
65. A, B, C, D. 32 degrees. Excuse me, sir. Yes, sir. Sir, is this figure correct that I have drawn? फिगर तो बुक में दिया है. Yes, sir. This same figure is in book, but in book it is totally different, sir. अरे कोई That बात नहीं बेटा, question. फिगर से मतलब है थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा तो हो जाता है. Yes, sir. वेरी गुड. Sir, यस सर. sir, I want to ask, sir, when in geometry, sir, we say every means, sir, every means 32 degree in your geometry. Sir, who invented this degree? 32 Father of degree. geometry. Do you know who is the father of geometry? Geometry के पापा का नाम मालूम है आपको? Euclid. His name is Euclid. He invented geometry. Sir, Euclid, the father of geometry, sir. Yes, sir. Yes, Euclid is the father of geometry. You can say that he is the papa of geometry. Sir, he said done his higher education in Gardan Ashabad High School. Yeah. Gardan, Do you know him personally? no, sir. Sir, but in Google it is written. So Google. Okay. Sir, sir, it is sometimes called Euclid of Alexandria. Distinguish him from Euclid of Megara was a Greek mathematician, often referred to the founder of geometry or the father of geometry. He was active in Alexandria during the region of Ptolemy 323 to 283 BC. अरे His बेटा बस achievements of बस one बस of the बस most बस अरे बस करो भैया. शुरू ही हो गए. चलिए भाई, let us do the question. So we have to find. Do you know who is the mother of geometry? No, sir. No. Sir, एक moment. अरे गूगल पे सर्च कर लोगे अब. Start your camera. Don't search on Google. There is only father of geometry. There is no mother of geometry. चलो. Sir. So this question is same like second one, and angle ACD equals angle A plus B Angle ACD exterior. is equals to angle A plus angle B. Reason. What is the reason? Exterior angle property. Angle property. Always write the reason. 65 degree angle A, 32 degree angle B, X मिल गया है. 65 minus 32 is equals to X. 33 degrees is equal to X. Good morning, sir. Good morning, sir. X equal to 33 degrees. Now, Y निकालने के लिए we will use the linear pair property. We can also use angle sum property to find Y, but linear pair से ज़्यादा easy रहेगा. Y plus angle ACD is equal to 180. Linear pair of angles. Y plus 65 is equal to 180. Y is equal to 180 minus 65. Y is equal to 115 degrees. Answer. X and Y. Any doubt in the question? बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन 2 था वैसे ही था. तुमने मेरे से टिक करवा ली बेटा. ये आप लोगों को करना चाहिए.
Sir, Yes. excuse me. Sir, how in the ACD y plus ACD equals 180 and then next step the y there is 65 degree? What beta? I am asking why there is 65 degree in the next step y plus angle ACD equals 180 degree. I am not able to understand क्या कह रहे हो. Sir, I am saying y plus angle ACD equals 180 and in the in place of ACD angle y there is 65 degree. Why there is not 32 degree? Y plus angle ACD is equal to 180 degree because these are linear pair of angles. ये वाले linear pair angles क्या होते हैं? जो लाइन के सेम साइड में होते हैं. इन दोनों का सम क्या होता है? 180. देखो ये वाले दोनों एंगल Y एंड एंगल ACD दोनों का सम 180 है. एंगल ACD की वैल्यू कितनी है? 65 है. Yes sir. पुट कर दी. Y आ गया 115. नहीं समझे? Sir, yes sir, understood. Okay. Fourth main figure one, fifth main figure one. Sir, 6th to 7th we have to do in book only. Sorry? Sir, what happened? Which one? Sir, 6th and 7th we have to do in book only. 6 and 7 क्यों बुक में क्यों करेंगे बेटा? 4th और 5th नहीं करेंगे अभी. क्वेश्चन 4 5 6 पे कहाँ से पहुंच गए? Sir, I'm just asking. नहीं, we have to do all the questions in the copy. Okay sir. Sir, Yes sir. sir, in geometry each exercise consists of less than 10 questions. Question number 4. Where is the pen? कहाँ गया भाई पेन? Question number 4. Sir, please open. Sir, please open your camera today also. Hello. Sir, Hello. Hello. No voice is sir, coming. please open your. An exterior angle of a triangle measures 110 and its interior opposite angles are in the ratio 2:3. Good. एक triangle है. We have to draw a triangle also. Yes, you have to draw the figure. Oh, अपने आप बनाना है so figure. there is no figure, but But you have okay, to sir, draw okay, the sir. figure yourself by reading the information given in the question. Question की Okay, sir. information को पढ़ के करना है. Exterior Okay, angle sir. 110 given है. पढ़ो देखो लिखा है exterior angle is 110. मार्क कर Yes, दिया. sir. And the opposite interior angles are in the ratio 2:3. That means angle A and angle B का जो ratio है वो आपको 2:3 दिया हुआ है. Okay. So एंगल A को हम कितना मार्क कर सकते हैं? 2x. X. X ने 2x because 2:3 Okay, ratio है. एंगल 2x degree. एंगल B हो जाएगा 3x. Sir, Okay. 2x degree. हाँ एक ही बात है. 2x and 3x. Find the angles of the triangle. We have to find all the three angles of this triangle. So now we are going to use the angle sum property. Same old angle sum property which you studied in pre-NC. Angle ACD No, sir. is equals to angle A plus angle B. That means the exterior angle property we are using. Exterior angle prop. Angle ACD we know 110. Let's put the value of angle ACD. Angle A 2x. Angle B 3x. 110 equals to 5x.
110 upon 5 is equals to x. Do the cutting shutting. What do you get? You get x equals to 22. X equal to 22. Very nice. Now you can find all the angles. Multiply by 2 and 3. X equal to 2x, that means 44. Sorry, angle A equals to 2x, that means 44. Angle B equals to 3x, that means 3 into 22, which is equal to 66. Now angle C कैसे निकलेगा? Angle ACB. Angle ACB plus angle ACD. Again, linear pair of angles. Therefore, the sum is 180. Linear pair of angles. Angle ACB, we have to find out. Angle ACD, we already know. So angle ACB is equals to 70 degrees. Is it clear to everyone? Yes. बेटा देख Yeah, लो sir. मैं समझाऊं. If any step is not clear, please tell me. Note down the question.
Yes, any doubt in the question? No, sir. No, sir. So let's start with the next question. I hope you all have done this in your copy. Yeah, sir. Yes, sir. Yeah, sir. Yes, sir. Yeah, sir. Yeah, sir. Sir, Yes. sir, can we start the fifth question? Yes, beta, we are starting the fifth question. Just wait for 2 seconds.
Okay, let's start doing question number 5. So today I think we can do the exercise, but there is no much time left. We can do what? Exercise complete. Sir, We can complete the exercise today only. No sir, problem. how there? So there are two periods. One is arrangement. No, in this period only. Sir, how, sir? I cannot, sir. Think so. We can do. Sir, but how, sir? We can do, sir. Let's Sir, करवा try. देंगे. We will try. Sir. Yes or no? Yes, sir. Okay. Yeah, So- sir. Yeah, sir. Question number 5. We have to draw again the figure. An exterior angle of a triangle is 100 degree and the interior opposite angles are equal to each other. There is a triangle, its exterior angle is 100 degrees. This is the triangle, exterior angle Sir, is triangle तेरा है, sir. no problem. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा. ट्रेड ट्रायंगल है तो क्या हम उसको नहीं लेंगे? सर भी इंसान है सर. दुनिया में टेढ़े ट्रायंगल नहीं हो सकते? हो सकते हैं. सो ट्रायंगल एबीसी में एक एक्सटीरियर एंगल है 100 डिग्री और इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है वो दोनों इक्वल है, तो दोनों को x मान लिया. ओके, अगेन द सेम प्रॉपर्टी, एंगल ACD is equals to angle A plus angle B. Write down the reason in the bracket. Exterior angle property. Angle ACD is 100 degrees. Angle A is x, angle B is also x. दोनों इक्वल दिए हुए हैं, आपको पढ़ लीजिए ध्यान से. Interior opposite angles are equal to each other. लिखा है. So 100 equals to 2x. X equals to 50 degrees. Angle A, angle B दोनों 50 के आ गए. Angle C कैसे निकालेंगे? इसको y लगा लेते हैं, एंगल C. सर एंगल सी 80. Y plus 100, very good. Angle C 80. Y plus 100 equals to 180. Linear pair of angles. बिल्कुल. So y equals Sir, to we 80 have done the degrees. chapter in the Question offline, five. sir. ठीक है बेटा, कर लिया नोट? No, sir. Please wait, sir. Sir, please. Question number Sir, 6. please. In the Sir, figure please wait, given. sir. अच्छा जल्दी करो बेटा, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं होगा आज पूरा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सर कल भी तो सर पीरियड है, कल पूरा हो जाएगा. कल हो जाएगा, है ना? सर आखिरी साल का आखिरी पीरियड. इस साल का आखिरी पीरियड, आखिरी साल थोड़ी है बेटा, Yes, sir. इसके बाद और भी बहुत सारे साल आएंगे. सर तब तो online ही करवाना चाह रहा है. बेटा, I think the previous question is clear, everyone. Yes, sir. Sir, now, sir, you can start. Sir, I've done, sir. Very good. अरे अरे क्या हो गया? why 180? So nothing, sir. You can start. Sir, ये कैसी फिगर है? ये ऐसी फिगर है. Okay, so let's start. We have to find two angles here. Angle ACD, जिसको हम x मार्क कर लेते हैं. इसमें कहाँ गया एंगल ACD? ये रहा, देखो x मार्क कर लिया. ये निकालना है. Sir, some And sir, angle- other student have joined. हैं? सर 60 डिग्री. Nothing, Angle sir. AED also we have to join. We have to find. Angle AED ये वाला है. E को अंदर कर देते हैं. Angle AED बाहर वाला है. ये वाला, इसको y मार्क कर लेते हैं. ठीक है. These two angles we have to find. Now अब ध्यान से देखो बेटा, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC को देखिए. ट्राइंगल ABC को देखना ध्यान से, मेरी आंखों से देखो बेटा. दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल?
दिख रहा है आपको? यस इस सर, ट्राइंगल के लिए ये एंगल x जो है ये फाइंड करना है हमको। एंगल x, एंगल x इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? यस, इट इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। एंगल x एक्सटीरियर एंगल है। कौन से ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल? ट्राइंगल ABC के लिए। सो x इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B, एक्सटीरियर एंगल प्रॉप। ठीक है, x आ गया आपका 25 प्लस 45, यानी कि x इक्वल्स टू 30 प्लस 40 70 डिग्रीज। ओके सर। नाउ y को देखो ध्यान से। y जो है आपका कौन से ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है? y आपका इस वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। देखिए, है ऑरेंज वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है y। यस सर। तो y इज इक्वल टू x प्लस 40। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करा है फिर से। x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे। कितना निकाला है? 70 प्लस 40, सो y इक्वल्स टू 110 डिग्री। इजी है या नहीं है? देखो सर वेरी वेरी यस सर, इजी एंड पीसी। इजी एंड पीसी। कौन सा पीसी? सर पता नहीं सर, उसका अलग ही पीसी है। सर पीजी। अच्छा पीजी है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मेरे को इंग्लिश ज्यादा आती नहीं ना, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। नो सर। Sir, we can, sir, how, sir, we can, sir, first write first angle ACD, then angle AED. सॉरी, So first we can write angle ACD, then we can write x equals A plus B. yes yes yes, you can do. So 2 questions left. Try the 7th one and 8th one yourself today in homework. If you don't get it, we will discuss the questions in tomorrow's class. Okay, sir. Okay, sir. So then we will start, sir, triangle. Sir, please share a screen, sir. I have to note down, sir. Yes, yes. Take a screenshot, jaldi se. Sir, I can note down. Sir, and sir, without